Welcome to Satya Siddhant. नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन ग्रंथों की बातें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की उलझनों को कैसे सुलझा सकती हैं, ये देखकर वाकई हैरानी होती है। आज हम एक ऐसे ही कमाल के वैदिक मंत्र की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ कुछ पुराने शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने का ही बड़े सवाल से करते हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी यानी सर्वोच्च उपलब्धि आखिर है क्या? हम सब दिन रात काम करते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं, पर क्या हमारी जिंदगी बस इसी सर्वाइवल की जद्दोजहद तक? ये है कि इस उलझन का जवाब हमें सदियों पुराने इस संस्कृत मंत्र में मिल जाता है। हम इसके हर एक शब्द को नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये उस परम शक्ति से की गई एक बेहद खूबसूरत प्रार्थना है। इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें मांगी गई हैं: कल्याणकारी बुद्धि, सही चीजें चुनने की ताकत, सच्चा ज्ञान और अंत में उस ईश्वरीय आनंद में हिस्सेदारी। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम आम तौर पर क्या मांगते हैं और असल में हमें जीवन का मूल आधार, एक मजबूत नींव। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है सुमिति का मतलब। Satya, Section 2, we call this Sumati, the steering wheel. It's the ultimate prerequisite. So, the magic word here is sumati. Basically, it means an auspicious intellect, a good mind, or beneficial inspiration. The rishi starts his entire request by essentially saying, hey, may your sumati never depart from us. Why? Well, because these ancient sages understood a pretty harsh reality. Without this one fundamental trait, कि ये बात हजारों साल पहले ही समझ ली गई थी कि अगर सुमति नहीं है तो हमारे पास चाहे कितना भी अन्न, शारीरिक ताकत, बड़ी बड़ी डिग्रियां या बेहिसाब पैसा क्यों ना हो, सब एकदम व्यर्थ है। बिना अच्छी बुद्धि के ताकत विनाशकारी हो सकती है, ज्ञान अहंकार बन जाता है और पैसा इंसान को पतन की तरफ ले जा सकता है। सुमति वो दिशा है जो इन सभी चीजों को सार्थक बनाती है। प्रार्थना के बाद अब इस चर्चा के दूसरे और बहुत ही सक्रिय हिस्से को देखते हैं, जीवन और श्रेष्ठ चयन, यानी सही मार्ग का चुनाव। यहाँ एक बहुत ही ऊर्जावान संस्कृत वाक्यांश आता है, समिशो वरंत। ये बस यूं ही कह दी गई कोई निष्क्रिय बात नहीं है। ये हमें पूरे होशो हवास में उन चीजों को चुनने का निर्देश देता है जो सबसे बेहतरीन है। मतलब जब भी हमारे सामने कई विकल्प हों तो हमें हमेशा उस विकल्प को अपनाना चाहिए जो कल्याणकारी हो, जो उत्कृष्ट हो। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि हमारा असली चरित्र उन चीजों से नहीं बनता जो हम जिंदगी भर जोड़ते रहते हैं, बल्कि उन फैसलों से बनता है जो हम हर रोज लेते हैं। बैंक बैलेंस या गाड़ियों की संख्या से जिंदगी परिभाषित नहीं होती। रोशनी और अंधेरे के बीच हम जो चुनते हैं ना, वही a good, grounded, clear intellect, literally everything else we accumulate in life is practically useless. Or worse, it's completely self-destructive. And this brilliantly illustrates a modern metaphor we can use to really picture it. Think of wealth and power as the engine of a sports car. They give you momentum, they give you serious speed, they propel you forward. But sumati, that auspicious intellect, that is the steering wheel. If you have a massive, roaring engine of wealth, the power of choice, focusing on our active decisions. The text uses this phrase, samisho varanta, which translates to, may we choose the best, or may we accept the excellent. Now, what's so cool about this is the active nature of the word choose. The text is basically suggesting that human life is not defined merely by its passive possessions, its random circumstances, or basic achievements. Your life is entirely defined by your active choices. It's all about what you consciously decide to accept and bring into your world. Let's look at how this plays out in the real world. A person equipped with sumati, that good, clear intellect, will consistently choose truth, righteous duty or dharma, and knowledge. On the flip side, someone lacking this, someone with what they call kumati or a corrupted intellect, will inevitably choose untruth and adara, meaning unrighteousness. Even if both of these individuals start with the exact same amount of money and the exact same power, their choices, dictated entirely by their intellect, will lead them down completely different life paths. Is it really enough to just be wealthy? Think about it. If our modern definition of success is just accumulating the biggest engine possible, are we entirely missing the point of what makes a life actually meaningful? The ancient sages certainly thought so. That brings us to Section 4, Redefining Wealth, where we shift gears to knowledge and nobility.
In this section of the mantra, the rishi addresses the divine as Magavan. This beautifully translates to the generous Lord or the ultimate giver. By using this very specific title, the text acknowledges that all resources ultimately flow from a higher, infinitely generous source. But what exactly is the rishi asking this generous giver for? Spoiler alert, it is not a bigger house. He actually asks for true wealth, which is encapsulated in words like Goshu and Arya. Now, Goshu literally relates to cows, which, fun fact, were basically the Bitcoin of the ancient world. But in the deeper Vedic philosophy, it represents light, knowledge, and nourishment. Arya, on the other hand, doesn't mean a race. In Sanskrit, it means nobility of character, excellence, and gentlemanliness. The rishi is asking to be made a participant in light, in profound knowledge, and in outstanding moral character. So the absolutely crucial point here is this. Being educated isn't enough. You must be wise. Being wealthy isn't enough. You must be noble. Perfectly sets up our final section, Section 5, the ultimate alignment and the highest achievement. The concluding request of the mantra uses the word Satamarana. And let me tell you, this is a beautiful concept. It means sharing an equal joy and participating in universal truth or dharma. The rishi states, may we become participants in your profound joy and your dharma. This tells us straight up that the absolute highest human achievement is not isolated selfish success. It is completely aligning your life with divine truth so that you can share in universal bliss. Let's see how this builds into a perfect, logical sequence for a truly fulfilled life. Step 1. Seek sumadhi, that good intellect, above literally everything else. Step 2. Use that intellect to make righteous, conscious choices every day. Step 3. Through those choices, attain true nobility and deep knowledge, not just cash in the bank. And finally, Step 4. Achieve a state of divine shared bliss. Guys, it's a complete step-by-step roadmap for human elevation. So I'll leave you with this final thought to ponder today. हमारा ही होता है। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे पहलू पर नजर डालते हैं। शिक्षा बनाम सच्चा ज्ञान, वास्तविक समझ की ओर। यहाँ इस शब्द अर्यः पर जरा गौर कीजिएगा। ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ जीवन जीने के साधन ना मिले, बल्कि सच्ची श्रेष्ठता, सज्जनता और ज्ञान के प्रकाश का हिस्सा भी मिले। इसे ही प्राचीन समय में आर्यत्व कहा गया था। ये समाज में कोई बड़ा पद हासिल करने की बात नहीं है, बल्कि भीतर से एक महान इंसान बनने की एक बहुत ही गहरी पुकार है। इस भावार्थ का ये हिस्सा एक ऐसा जबरदस्त सबक देता है जो आज के समय में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि हमारा समाज अक्सर पैसों और डिग्रियों को ही सफलता मान लेता है, पर इस मंत्र के हिसाब से किसी भी व्यक्ति की सबसे गहरी जरूरत सच्ची श्रेष्ठता और वास्तविक ज्ञान है। सिर्फ साक्षर होना या अमीर होना काफी नहीं है, बल्कि अंदर से एक श्रेष्ठ और ज्ञानी इंसान होना असली अचीवमेंट है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर, जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि, परम लक्ष्य की प्राप्ति। इस एक लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। महिष्ठास्ते सद्मादः स्याम। ये कोई आम प्रार्थना नहीं है, इसे पूरे सम्मान और शांति के साथ समझना चाहिए। ये उस परम शक्ति से की गई सबसे बड़ी, सबसे गहरी विनती है कि हम उस ब्रह्मांड के सर्वोच्च आनंद में सहभागी बन सके। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और सरल करते हैं। सद्माधा शब्द का मतलब वाकई में बहुत कुछ कह जाता है। ये बताता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ हाथ जोड़कर डरना या दूर से प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि उस सार्वभौमिक आनंद और सच में एक भागीदार, एक हिस्सेदार बनना है। ये उस परम आनंद के साथ पूरी तरह से एक हो जाने का विचार है, जहाँ कोई डर नहीं बल्कि एक पूर्ण सहभागिता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये सारी कड़ियाँ आपस में कैसे जुड़ती हैं। ये हजारों साल पहले तैयार किया गया आध्यात्मिक प्रगति का एकदम सटीक नक्शा है। सबसे पहले आती है शुभ बुद्धि, फिर उस बुद्धि की मदद से हम सही चीजें चुनते हैं, उन फैसलों से हम सच्चे मायने में एक श्रेष्ठ इंसान बनते हैं, और अंत में यही श्रेष्ठता हमें उस ईश्वरीय आनंद की मंजिल तक ले जाती है। एक के बाद एक जुड़ने वाली ये कितनी तार्किक प्रक्रिया है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरे सवाल के साथ हमें खुद को छोड़ना चाहिए। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो फैसले ले रहे हैं वो हमें इस ईश्वरीय आनंद की तरफ ले जा रहे हैं? क्या हम सच में सुमति के रास्ते पर चल रहे हैं? इस प्राचीन ज्ञान को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, इसे जीना भी जरूरी है। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।
आज की इस चर्चा में बस इतना ही। Of this blueprint, let's translate a couple of the foundational words so we know exactly who the Rishi is talking to and what he's actually talking about. Take Vajrapramaho. That translates to the great giver of strength, knowledge, and wealth. And then there's Samisha, which refers to excellent wealth, superior materials, beneficial properties. So the setup is crystal clear here. We are addressing a supreme source of ultimate resources. But, and this is a massive but, before asking for any of those resources, the Rishi sets a very strict prerequisite. Moving right along to... We live in an era of absolute abundance. We have instant access to more capital, more data, and more raw resources than any generation before us. Yet many of these systems are accompanied by a distinct sense of unfulfillment. Our first instinct is simply to keep accumulating. But building a structure with no central logic to manage weight creates a system that eventually folds under its own complexity. Thousands of years ago, a Vedic rishi identified this missing variable. He articulated it in a single Sanskrit mantra, Ma sa the asmat sumatir vidasat. The text proposes a specific thesis, that the trajectory of a life is determined by the quality of its choices, rather than the quantity of its acquisitions. If the goal is fulfillment, focusing on acquisition is an incomplete strategy. It prioritizes the volume of the input while ignoring the internal operating system required to process those resources into something useful. Look closely at the opening lines. The rishi addresses a supreme power, calling it the generous giver of wealth and strength. But he does not ask for more wealth. Instead, he makes a specific request for sumati, an auspicious intellect or a welfare-oriented wisdom. He asks that this guiding intelligence never be separated from him. Resources like wealth and power are neutral multipliers. Passing through the filter of sumati, the intellect organizes them to serve the common good. However, without this constructive intellect, those same resources simply amplify the scale of existing chaos. This leads to the next action dictated by the mantra, some paths that align with this higher logic. It contrasts the habit of passive hoarding, taking whatever is available, with a mandate for deliberate selection. In this sense, sumati functions as a cognitive filter. It ensures that the resources we acquire do not become a source of instability, but are instead used as tools for meaningful action. If we move away from wealth and power as primary metrics, how do we measure the success of these choices? The mantra sets a specific standard: participation in Goshu, light and knowledge, and Arya, meaning nobility of character. The text suggests that wealth, on its own, is an insufficient metric for a successful life. The presence of Aryatva, or nobility, is presented as the necessary requirement for true achievement. A similar distinction is made between information and wisdom. From the Rishi's perspective, having access to raw data is secondary to being wise. One is an accumulation, the other is a state of being. This stands in contrast to modern structures that prioritize credentials and bank accounts, often while the underlying character remains unexamined. The Vedic perspective suggests that these assets are effectively dormant without nobility of character to direct them. Our impact on the world is gated by our moral foundation. Where does this path of wisdom and nobility lead? The mantra concludes with the concept of Sadamadaha Syama. This translates to becoming a participant in shared joy and universal dharma. This suggests the ultimate goal is not isolated superiority, but a state where your individual elevation contributes to a collective one. One model of success focuses on accumulation to build walls, creating an isolated security. The Vedic model uses wisdom to do the opposite. It turns resources into a network of shared benefit, where individual choices illuminate the surrounding environment. The peak of human existence is therefore found in the quality of the choices we make when guided by sumati. Fulfillment is not prized to be won in isolation. It is a shared reality that is engineered through the choices we make every day.